हाय एवरीवन। वेल आईसीआईसीआई ने सप्लीमेंट रिलीज कर दिया है और ये सप्लीमेंट दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए है। तो देखते हैं JIGL दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज में इस सप्लीमेंट में ऐसे क्या क्या केसेस दिए गए हैं और क्या क्या फैक्ट्स डिस्कस किए गए। ठीक है, चलिए तो JIGL की जहां तक बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर मॉड्यूल 1 पेपर 1 के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें यहाँ पे आईसीआईसीआई ने इंक्लूड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, लिमिटेशन एक्ट और बहुत सारी चीजें भी। वेल इसके अंदर एक एक करके समझते हैं। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन का केस लॉ आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये केस क्या कहना चाहता है एक बार फ्रेशन अप कर लेते हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ सिल्क लोटो सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। Okay. In this case, the constitutional validity of levying taxes on lottery, betting, gambling was challenged in the court. Well, केस के बारे में ऐसी है कि ये केस ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी जहां पर लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और ये सब चीजें चैलेंज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं क्लियरली बोल दिया कि देख टैक्सेशन ऑफ द लॉटरी एंड प्राइज मनी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली लॉफुल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन बेटिंग वगैरह पे कोई टैक्स नहीं इम्पोज कर सकते, ये बिल्कुल इम्पोज कर सकते हो और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट आल्सो रूल्ड दैट गेमिंग एंड लॉटरी फेल्स अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स परव्यू एंड देयरफॉर दे आर लेजिटिमेट इन लॉज आल्सो। तो जीएसटी उन पे लगाना अपने आप में एक वैलिड बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा जीएसटी का प्रोविजन भी डिस्कस किया है। Well, the value of taxable service is a matter of statutory regulations, and when the value is to be transaction value, which is to be determined as per Section 15 of GST, is not permissible to compute the taxable supply of excluding the price which has been contemplated in the statutory scheme. तो सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि टैक्सेबल सप्लाई वैल्यू क्या होगी, बिकॉज जब प्राइस मनी जीती जाती है तो इसमें यही एक क्वेश्चन उठता है कि सर हम यहाँ पे खरीदना और बेचना नहीं हो रही, यहाँ पे कोई सर्विस नहीं दी जा रही, तो फिर एक्चुअली वैल्यू क्या होगी। वेल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्लियर किया है कि जब हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं सेक्शन 15 ऑफ सेंट्रल सीजीएसटी के हिसाब से, तो इट इज नॉट परमिसिबल टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बिकॉज देयर इज नो टैक्सेबल सप्लाई बट इट इज excluding the price which has been contemplated. So when the price which is paid by the distributor agent is not contemplated to be excluded from the value of taxable supply, we are not persuaded to accept the submission of the petitioner that the prize money should be excluded from computing the taxable supply. Prize money should be excluded. So देखिए यहाँ पे उसने पूरी तरह कोशिश की है ये समझाने की कि सर प्राइस मनी जो है वो टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू से एक्सक्लूड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो प्राइस मनी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू से स्पेसिफिकली अगर एक्सक्लूड किया गया हो तो बात अलग होती है, लेकिन प्रेजेंट केस में प्राइस मनी टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू से एक्सक्लूड किया जाए ऐसा कोई केस नहीं बन रहा है। ओके, क्योंकि आपने प्राइस मनी को टैक्सेबल सप्लाई के वैल्यू में इंक्लूड किया है तो अब उसको जाके एक्सक्लूड करने का कोई सवाल नहीं उठता। एज अ रिजल्ट वी कंक्लूड दैट व्हाइल डिटरमाइनिंग द taxable supply, the money is not to be excluded for the purpose of levy of GST. तो taxable supply डिटरमाइन करते समय इसको एक्सक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस ओवरऑल केस में क्या हमने समझा? वेल ओवरऑल केस में इतना ही था कि द लेवी ऑफ taxes on lottery, betting and gambling is valid in law. Okay, so levy of taxes on lottery, betting and gambling, that is a very well valid process in court of law. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, चलो आपको ये केस तो समझ में आया। नेक्स्ट केस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक और केस था, यहाँ पे ये था कि स्वप्निल त्रिपाठी and others versus Supreme Court of India and others. Okay, 2018 का केस है। In this case, petitioner have sought a declaration that Supreme Court proceedings of constitutional importance have an impact on public at large or large number of public people should be live streamed in a manner that is easily accessible for public view. ओके, सो यहाँ पे स्वप्निल त्रिपाठी जी ने एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जब आप एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाली बात करते हो तो ये जो लिटिगेशन होता है ये पब्लिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और जब ये लिटिगेशन पब्लिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, पब्लिक उसे देख सके, समझ सके कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट सुनता और करता क्या है। Three-judge bench of the Supreme Court held live streaming of court are important to enable administration of justice, especially owing to the effect it has on public at large. चलो, एक अच्छी बात हुई, थ्री जजेस बेंच ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बोला कि यस, लाइव स्ट्रीमिंग तो बनती है, and it is important to re-emphasize the significance of live streaming as an extension of the principle of open justice and open courts. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और भी एक्सेप्ट करते हुए बोला कि यस, हम जिस जुडिशियल सिस्टम में वहां पे ओपन जस्टिस और ओपन कोर्ट सिस्टम है, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग तो बनती है, और ये लाइव स्ट्रीमिंग सही तरीकों से हो, यही अपना मेन गोल है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट पास कर दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग इज क्रूशियल टू द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड अबाउट द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड ग्रांटिंग ऑफ फुल एक्सेस टू द जस्टिस टू द लिटिगेंट. Access to the justice can never be complete without litigant being able to see, hear and understand the course of proceedings at the first time. So Supreme Court clearly बोला है कि देखो, लाइव स्ट्रीमिंग कहने भर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पे आप लाइव एक्सेस दे देते हो टू द लिटिगेंट। और ना सिर्फ ये लाइव एक्सेस देने की बात आती है, यहाँ पे काफी सारी चीजें इस कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स में आउटकम देती है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइव स्ट्रीमिंग सही तरीकों से होती रहे। Well, apart from this, live streaming is an important facet of responsive judiciary which accepts and acknowledges that it is accountable to the concern of those who seeks the justice. Okay? So, इस केस में हमने टोटल ओवरऑल समझा क्या? Well, इस केस में ओवरऑल यही था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। So, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल मैटर्स, okay, और सुप्रीम कोर्ट मैटर्स was allowed. Okay, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, live streaming of judicial hearings of public importance is allowed. ओके, सो इस केस को याद रखना, या रादर केस के इस कंटेक्स्ट को याद रखना कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जुडिशियल हियरिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज अलाउड. Got it? Clear? Fine. So that was Swapnil Tripathi case. Another case, Municipal Corporation of Greater Mumbai versus Ankita Sinha का केस. Well, ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था, और इस केस में क्या था? Well, in case the principal issue was whether a national green tribunal, in short, the tribunal can exercise suo motu jurisdiction or initiate suo motu action. Well, it was decided that the tribunal may initiate a suo motu action. However, the same is subject to opportunities of being heard, the court in the judgment stated. Okay? So, एक interesting question of law था. कई बार ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल्स के केसेस में उठते हैं, स्पेशली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के केस में, इसलिए क्योंकि वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आता है. तो क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है? क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुओ मोटो अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए स्टेप्स ले सकता है? ये बात उठी थी. well, इस बात का आंसर करते हुए यहां पर ये जजमेंट बोलता है कि यस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुओ मोटो अपना एक्शन ले सकता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुओ मोटो अपने स्टेप्स भी ले सकता है, लेकिन लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. तो देखिए जजमेंट में क्या था. The judgment rendered by this court predicates that even if the tribunal intends to initiate suo motu action, they must give an opportunity of the parties likely to be affected by passing adverse order against them. Viewing this ex parte preemptory orders which is passed by tribunal without giving opportunity to the person likely to be affected will be treated as if phased from the record. सो बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए. तो यस, इस केस का समरी बस इतना ही था कि नेशनल एनजीटी कैन इनिशिएट सो मोटू एक्शन
after providing opportunity of being heard. Okay, yes. So National Green Tribunal can initiate suo motu action after providing a sufficient opportunity of being heard. तो इस केस को इस नाम से याद रखना कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था. So yes, they can do that. ठीक है. Another case देखते हैं. Another case, that is the case of सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इस केस में क्या था आउटकम? वेल, केस कुछ ऐसा था कि इन दिस केस taking the notice of the continuous supply of cases seeking a bail after filing of the final report on a wrong interpretation of section 170 of the CRPC. An endeavor was made by the Supreme Court to categorize the types of offences to be used as a guidelines for the future. Okay. सो केस में सेक्शन 170 ऑफ सीआरपीसी का गलत इंटरप्रिटेशन आ गया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं जा रहा, जिसकी वजह से कोर्ट्स गलत डिसीजंस ले रहे. तो एक गाइडलाइन फ्रेमवर्क की गई थी इस केस में उस एक्शन के लिए. तो इस केस में क्या बोला गया? द प्रिंसिपल दैट अ बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन has well been recognized through the repetitive pronouncement of this court. Okay, and this again is on the touchstone of Article 21 of Constitution. देखो, सबको राइट टू लाइफ होता है, सबको जीने का हक होता है. तो बेल इज अ रूल कि आपको अगर बेल देना पड़े और ग्राउंड सेटिस्फाई हो रहे हैं तो बेल देना चाहिए. जेल इज नॉट अ वे आउट के हर चीज को, हर बार को, हर पर्सन को जेल में डाल दिया. तो जेल इज एन एक्सेप्शन. और ये कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई कोर्ट्स में डाला है कि हम इंडिया में आज भी रिट्रीब्यूटिव लॉज प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से. मतलब हम लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, ना कि उनको पनिश करने की कोशिश करते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई वी प्रैक्टिस अ लॉ जहां पे लोगों को अपनी गलती का एहसास है तो उसको सूटेबल रिलीफ दी जाए. ठीक है. अब देखो, इस प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट issued certain directions. However, they may be subject to state amendments. These directions are meant for investigating agencies and also for courts. The directions: the Government of India may consider introduction of a separate enactment in the nature of Bail Act so as to streamline the grant. Supreme Court का कहना था कि Government of India sorry, हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो एक खुद का एक बेल एक्ट बना दे. बेल एक्ट होने से क्या होगा? बेल के सारे प्रोविजंस जो है वो अपनी जगह एक ही जगह आ जाएंगे. फिर अलग अलग एक्ट में आपको अलग अलग बारे में बेल देने की जरूरत नहीं है. बेल एक्ट ही अपने आप में काम कर जाएगा. एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड officers, they are duty bound to comply with the mandate of section 4141A of the Code for Directions of Arnesh Kumar. Any dereliction on the part has been brought to the notice of the higher authorities, followed by the appropriate. So, investigation agencies और इनको को, that is duty bound officers को भी clearly बोल दिया गया है कि देखिए, आपको अरेस्ट हर केस में नहीं करना है. मतलब अगर आप बेसिक इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उठा के उसको जेल में डालो, मारो वगैरह. नहीं, दैट्स नॉट द वे. सो जहां पर भी सफिशिएंट एक्शन इस तरह के लिए गए हैं और ये बात इसके कोर्ट या अथॉरिटीज के नोटिस में लाई गई है, सो कोर्ट एंड अथॉरिटीज शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे टेकिंग केयर ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पे सही तरीकों से, ओके, सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम सामने वाले को सूटेबल रिलीफ दे सके. और उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस डिटेल सब्जेक्ट में ले डाउन करने की कोशिश की. यहाँ तक कि कोर्ट्स विल हैव टू सैटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द कंप्लायंस ऑफ 4141A ऑफ कोड. फॉर एनी नॉन कंप्लायंस वुड एंटाइटल द अक्यूज्ड टू ग्रांट द बेल. तो सो कोर्ट्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पे बेल दी जा रही है तो सूटेबल रिलीफ दी जा रही है कि नहीं जा रही. 4141A की कंप्लायंसेस हो रही है कि नहीं हो रही, इस बात का भी कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, सो ये ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा.
तो इसमें एक सवाल उठता है, अच्छा बाय द वे बच्चे पूछ रहे हैं सर 41 ए क्या होता है? वेल 41 का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, एंड जहां पे भी 7 इयर्स के ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट है टू सर्व अ नोटिस। तो मैं ये भी बता देता हूँ, जो सेक्शन 41 है दैट इज पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ऐसे वाले हैं। और सेक्शन 41 ए जो है दैट इज नोटिस बाय पुलिस होता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली वही गाइडलाइंस दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका पुलिस अरेस्ट बाय विदाउट वारंट वाला केस आ रहा है या ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तो इन दैट केस पुलिस को अरेस्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं आप नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, कहीं आप राइट टू लाइफ को इग्नोर तो नहीं कर रहे, कभी आप उसको ओवरराइड तो नहीं कर रहे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए अरेस्ट निकालनी है, और स्टेट गवर्नमेंट सुटेबल अमेंडमेंट्स कर भी सकती है, तो वो बात भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। दैट इज ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टेड टू फैसिलिटेट स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड अंडर सेक्शन 41-41A। सो पुलिस का अरेस्ट करने का तरीका, नोटिस देने का तरीका, इसमें क्या होना चाहिए? लोग उनसे डरे नहीं, रादर देन उनसे कोऑपरेट करें, ये कैसे करना चाहिए? well, इस सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज सुटेबल गाइडलाइंस निकाल सकती है। while taking the note of the order of the High Court of Delhi in the writ petition so and so, by standing order was issued to दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर निकाला था और ऐसे डायरेक्शंस इशू किए हुए हैं। Okay, there need not be any insistence of a bail application while considering the application of other sections also. So कौन से सेक्शंस में बेल एप्लीकेशन एक्चुअली एक मूव करने की जरूरत है, और कौन से सेक्शन एक प्रिविलेज देती है जहां पे आप आराम से बेल पा सकते हो, तो अनलेस यू डोंट इवन रिक्वायर एन एप्लीकेशन। तो इस तरह का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाट द पॉइंट वाज कि एक बेल एक्ट डाला जाए ताकि ये क्लियर कर दिया जाए, या बेल पे डेडिकेटेड चैप्टर डाल दिया जाए, ये क्लियर हो जाए कि क्या प्रोविजंस करनी पड़ेंगे। इनफैक्ट अभी जो नया सीआरपीसी लॉ बनाने की कोशिश की है, उसमें भी ये थोड़ा बहुत ट्राई करने की कोशिश की है कि बेल पे ही डेडिकेटेड प्रोविजन का एक चैप्टर हो। एंड देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द मैंडेट लेड डाउन इन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। ओके, इतना ही। सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते ये भी कह दिया कि जहां पे हम लोग ने डायरेक्शंस इशू किए हैं, कई लोग होता क्या है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, और उसके वजह से नॉन कंप्लायंसेस काफी होते हैं। तो देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस। ओके, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। एंड द सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है जो क्रिमिनल सेगमेंट्स में स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात उठी है, तो उनके लिए सुटेबल डायरेक्शंस और सुटेबल स्टेप्स लिए जाने चाहिए। The higher court, in consultation with the state government, will have to undertake the exercise for the special courts. Okay? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई कोर्ट्स पे डाली है कि आप क्रिमिनल मैटर्स को फास्ट ट्रैक पे डालने के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, वो स्पेशल कोर्ट्स के ऊपर स्टेप्स लिया जाए। अच्छा, स्पेशल कोर्ट कोई अलग से कोर्ट नहीं है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ही है जिसको डेजिग्नेटेड पावर्स दी जाती है, वही स्पेशल कोर्ट है। ओके, एंड द वैकेंसी in the position of presiding officers of the special courts will have to be full. So सुप्रीम कोर्ट का ये भी डायरेक्शन है कि जहां तक हो सके स्पेशल कोर्ट्स की वैकेंसी जो है वो प्लीज फिलअप की जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल रहा है कि the high courts they are directed to undertake the exercise of finding out the under trial prisoners who are not able to comply with the bail conditions. ये हाई कोर्ट पे डाला है कि ये पता करो कि कौन से ऐसे प्रिजनर्स हैं जो बेल के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर पाए या नहीं कर सकते। एंड आफ्टर डूइंग सो एप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन इन दिस सेक्शन 440 ऑफ सीआरपीसी फॉर फैसिलिटेटिंग रिलीज। कि उनका बेल कब का हो जाना चाहिए था, पर बेचारों के पास पैसा नहीं है, जो भी है, तो उनके रिलीज के लिए सुटेबल एक्शन ली जाए। एंड इंसिस्टिंग अपॉन सिक्योरिटीज फॉर द मैंडेट ऑफ 440 हैज बीन केप्ट इन माइंड। तो ये चीज का भी ध्यान रखें कि कैसे सूटेबल श्योरिटीज ली जा सकती है। इतना ही नहीं, इन एक्सरसाइज दे विल हैव टू बेयर they will have to be done in a similar manner complying the mandate of 436. Both district judiciary and the high courts are directed in the court of Bhim Singh to follow the appropriate. So ये एक्सरसाइज करते समय पूरी तरह ध्यान रखें कि हम लोग एक प्रॉपर प्रोसेस, एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस
ड्यू तरीका फॉलो करके ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। And the bail application ought to be disposed of within 2 weeks except for the provisions of mandate otherwise, with the exception being intervening application. So जहां तक हो सके बेल एप्लीकेशन ASAP as soon as possible डिस्पोज ऑफ हो जाए, पर 2 वीक के अंदर ये बेल एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो ही जानी चाहिए, बारिंग जहां पे भी इंटरवीनिंग एप्लीकेशन या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया हो। Application for anticipatory bails are expected to be disposed within 6 weeks with the exceptions of intervening applications. So even anticipatory bails को भी dispose हो जाना चाहिए as soon as possible, barring some two things. And the state government and union territories and high courts, they are directed to file affidavits within 4 months कि सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डायरेक्शंस के बाद उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, उसके लिए उनको ये नोटिफिकेशन डालनी पड़ेगी। क्लियर? सो ये पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा तरीका है, ओके, ये क्या था? ये एक्चुअली ये था कि बेल देने का तरीके के ऊपर और पुलिस के अरेस्ट के तरीके के ऊपर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस दी गई थी। ओके, ये था। सो आप स्टार्टिंग से अगर देखते हो तो ये पूरा प्रोसेस पर इतना ही था। दिस वाज द गाइडलाइंस फॉर बेल प्रोसेस एंड अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से आप इसको अगर देखना चाहो या पढ़ के देखना चाहो तो भी काफी है। Okay, so this was the guidelines by Supreme Court on process of police arrest and bail of So ये गाइडलाइंस थी ऑन द प्रोसेस ऑफ पुलिस अरेस्ट, पुलिस का अरेस्ट कब, कहां, कैसे, किस नेचर में हो सकता है, एंड द बेल ऑफ द अक्यूज्ड, यानी अक्यूज को आप बेल दे सकते हो तो किस नेचर में, कब, कहां, कैसे दे सकते हो। गॉट इट? क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस केस। ठीक है, चलिए अब आगे के केसेस देखते हैं। तो आगे के केसेस में हम देखते हैं कौन से केसेस और आ रहे हैं। सो आगे हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आ गया। चलिए, सो अब हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। तो यहाँ पे द अथॉरिटी फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एडवांस रूलिंग वर्सेस कावी शिपिंग मिल्स का केस। इस केस में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन इट्स ऑर्डर डेटेड 22nd of October that when the entry in the question specifically provides for exception of the goods described in Hankyan without any ambiguity or qualification, its import cannot be restricted by describing it as being available only for hank from one raw material like cotton, or nor could it be restricted to reference to the industry also. So अब ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का उठा है। एग्जैक्टली जब ये क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का उठा है तो ये जीएसटी जैसे एक पॉइंट को लिया गया है। इंटरप्रिटेशन के अंदर आपने कई सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उसी में से एक प्रिंसिपल्स में ये क्वेश्चन उठाया है कि जब वर्ड हैंकियान, ओके, ये जो हैंकियान जब स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है तो क्या इसके अंदर एम्बिग्युइटी, क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशंस क्रिएट करके इसके इंपोर्ट को एक दूसरी कैटेगरी में डालकर इस पे ड्यूटी डाली जा सकती है? वो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया है कि सर क्या इस तरह से भी आप ड्यूटी डाल सकते हो? वेल, द कोर्ट इन पैरा 11 of order has mentioned that the entry in the question as inserted in the 4th schedule of the Act is clear and specific that Hankyan carries neither any ambiguity nor any confusion. Undoubtedly, the yarn is a Hank form which is a unit of measure and has come for exemption under entry 44. Okay, so Supreme Court उस डिसीजन को कि ये हैंकियन अपने आप में एग्जेम्प्टेड है, इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर करता है, देखिए जब आप एक ड्यूटी के रिस्पेक्ट में किसी चीज को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो कौन से एंट्री लिस्ट में आता है और उसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगती है। अगर ये एंट्री लिस्ट की बात करें तो ये 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट के अंदर कवर करता है और इसके ऊपर कितनी ड्यूटी लगेगी। एंट्री 44 के हिसाब से इसको एग्जेम्पशन दी गई है और ये क्योंकि हैंडलूम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो सुटेबल एग्जेम्पशन उसे मिलनी चाहिए। ओके,
सो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि that the exception ensures the benefit of the handloom industry too. So however, for that matter, if the benefit of this board broad and unambiguous entry also goes all to any other industry, that is absolutely no reason to deny the benefits. अब ये पॉइंट अथॉरिटी ने रेज किया। अथॉरिटी ने कहा है कि सर ये जो एग्जेम्पशन मिलता है हैंडलूम इंडस्ट्री को, जिसके वजह से हैंगक्यान कवर कर रहा है, लेकिन इसके वजह से जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए लेके जा रहे हैं उनको भी एग्जेम्पशन मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिल रहा है, पर ठीक है, इस ब्रॉड और इस अनएम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन को हम सिंक्रोनाइज करते के हम उसको एम्बिगुअस नहीं बना सकते। हम उसे वो इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते कि जिसमें ड्यूटी लगनी चाहिए, जब एग्जेम्पशन क्लियर वर्ड्स में दिया गया है। तो so in other words, we find no reason to restrict the entry. Okay, we find no reason to restrict the entry in this operation to handloom industry alone or to any particular class of hangkyan like a cotton hangkyan only. Okay, so you clear कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बोला, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ रीजन कि ये जो एंट्री है वो ये हैंडलूम इंडस्ट्री और हैंगक्यांस की तरफ, स्पेशली कॉटन हैंगक्यांस की तरफ, ये जो एग्जेम्पशन दिया गया है, अगर वो क्लियर है, अगर वो अनएम्बिगुअस है, तो उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए कोई एक्सटर्नल एड्स, कोई इंटरप्रिटेशन की कॉल ही करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि हमें कोई बजट की कॉपी मंगा के उसको रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉ अपने आप में इतना क्लियर है। सो द एग्जेम्पशन, that is the entry being made is clear. No external aid for interpretation is called for, whether in the form of budget speech or any kind of notification. Okay? So इस पूरे केस में सर समझा क्या? Well, पूरा केस ऐसे था, when the words of a statute are clear and unambiguous, then no external aid is required for its interpretation. बस इतना ही था, exactly. बस इतना ही था. Okay? So याद रखना कि when words of statute are clear and unambiguous, then no external aid is required for when the words of the statute are clear and unambiguous, no external aid is required for its interpretation. चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसी केस लॉ तो अलग अलग आएंगे, आपको उसके बेसिक क्रक्स को समझना है, और आपने यहाँ पे ये समझ लिया तो भी काफी है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। एंड आगे चलते हैं। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का केस। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का केस। द रूल ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जूरिस्ट A.V. Dicey. He derived the term from the French principle la principle de legalite, which means that the principle of legality. It states that the government should be governed by the rule of law instead by the rule of individual. Any dictator, any monarch, one particular person should not govern the functioning of any nation. Each country should follow the legality of law. Okay? So ये डाइसी का मानना था। वेल एक्चुअली ये कोई केस लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है। तो डाइसी जो थे उनका, या उसको डीसी भी कई लोग बोलते हैं, डाइस भी कई लोग बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन है, तो ये मतलब आप अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। बट उसका ये मानना था कि रूल ऑफ लॉ शुड बी द लॉ एप्लीकेबल फॉर लॉ। क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल, अगर आप एक मोनार्की, अगर आप एक डिक्टेटर के हाथ में लॉ दे देते हो, तो होता क्या है, वो अपने को छोड़ के सबको एप्लीकेबल करता है। तो दैट शुड नॉट बी द वे अ कंट्री शुड बी रूल्ड। द कंट्री हैज टू बी रूल्ड बाय something what Abraham Lincoln used to say, the government of the people, by the people, and for the people. So Dicey was highly influenced by the French concept of administrative law, that is droit administratif, okay, on administrative tribunals,
According to this, a citizen's lawsuit against public servant for the wrong done in that capacity will be handled by a special court rather than a regular court. So, no doubt, रेवोल्यूशन पीरियड में फ्रेंच, ब्रिटेन और ऐसे कई पीरियड और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो नोन है जिसमें कई बार फ्रेंच गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। उन्हीं प्रिंसिपल्स के डेवलपमेंट के अंदर डाइसी को ये कंसेप्ट जब ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव जब आया था तो ये काफी पसंद आया। उसको उसको लगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का सेटअप अपने आप में सही है और जो गलत चीजें होती है इन दैट डिफरेंट कैपेसिटी विल बी हैंडल्ड बाय द स्पेशल कोर्ट्स। Okay, that has to be handled by the special courts rather than the regular courts. And उसका ये कहना था the droid administrative contains a regulation that is created by the judges of the administrative court rather than the rules created by the French bar. तो उसका ये भी कहना था, देखिए कोर्ट्स को अपनी एक इंडिपेंडेंट एरिया होनी चाहिए जहां पे वो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लेजिस्लेशन क्रिएट कर सके। ओके, एंड द मेजर प्रिंसिपल ऑफ डाइसी इन हिज बुक रूल ऑफ लॉ आर, तो उसने क्या क्या 3 मेजर प्रिंसिपल्स की बात की थी। एक तो बात की थी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब दिस गाय वाज फैसिनेटेड बाय लॉ, ही वाज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉ कि उसने इसके ऊपर पूरा प्रिंसिपल्स की बुक डाल दी। उसने कहा कि इट मींस दैट द ऑर्डिनरी और रेगुलर लॉ शैल रिमेन सुप्रीम। ओके, बी इट an ordinary, be it a regular law, but it has to remain supreme. Supremacy has been absolute or predominance of a regular law as arbitrary or wide discretion. तो लॉ को अपने आप में सुप्रीम होना ही चाहिए, लॉ को अपने आप में टॉप पे आना ही चाहिए, because supremacy is a kind of law that has to be there in all branches of law. Okay, and the next is equality before law. कानून की आंखों में सब एक जैसे, that's how. So that means all cases must be equally subject to the ordinary rule of land as administered by the courts of law. सबके लिए एक ही जैसा लॉ, एक ही जैसा एप्लीकेबिलिटी होगा. You cannot have a differential. He states that there should be equality between the people, be it the king, be it the pauper, but everyone should be equal in the eyes of law. That has to be there. It has to be the equality of the people, by the people, and for the people. Dicey says all classes must be equal, subject to the ordinary law that has to be administered. सारे के सारे लोग कानून की आंखों में एक जैसे हैं, and when we are administering the law, all classes has to be of the same category. That all equals before the law, and everyone should be subjected to the rule of law. ये डाइसी का कहना था, उसकी बुक मैंने भी पढ़ी, काफी अच्छी बुक थी. All equal before the law and subjected to the law. Okay. And the third principle was predominance of the legal rights. Okay, the legal spirit refers to the judicial precedents and the dispute which is raised by the individual. So what is a legal spirit? A legal spirit is that people should be able to approach the court. They can raise the dispute. A judgment which is given in the case should be with the legal spirit. Okay, it refers to the law by the precedents to evolve. बिकॉज लॉ अपने आप में इवॉल्विंग होता है, हर बार नया जजमेंट, नए ट्रेंड, नई चीजों के हिसाब से आता है। एंड दैट इज द रीजन वाई कि कई बार कई लोग बोलते हैं सर इतने साल पुराना लॉ और आज का लॉ में काफी फर्क है, पर होगा, चीजें बदलती हैं, लॉ भी इवॉल्व होता है। सेम कानून, आई एम नॉट किडिंग, सेम कानून, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन टाइम के हिसाब से बदलते हैं, उनकी समझ, उनके लोगों के अंडरस्टैंडिंग अपने टाइम के हिसाब से बदलते हैं। और यही वो बोल रहा है कि द जजमेंट गिवन इन द केस विल बी लीगल स्पिरिट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. इट रेफर्स टू द लॉ एज अ प्रेसिडेंट दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Okay, few jurists have criticized the rule of law theory. It is not clear between the administrative discretion and the arbitrary discretion. Emphasizing on equality before law feels that specific tribunals should not exist. तो कुछ jurist को इस बारे में, देखो कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सारी चीजें कवर हो जाए. There has to be merits and demerits. तो इन दैट केस कुछ जूरिस्ट को ये आर्बिट्ररी प्रिंसिपल और ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका पसंद नहीं आया. इनफैक्ट कई ऐसे भी जजेस हैं जिनको ये ट्रिब्यूनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ही समझ में नहीं आता. उनके हिसाब से कोर्ट इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू डू द बिजनेस. यू डोंट हैव टू गो लिटिगेशन टू ट्रिब्यूनल्स.
तो उनके हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसमें कई ट्रिब्यूनल्स ऐसे होते हैं जिसमें इक्वालिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता है। इसका मतलब जैसे अगर आपके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाए तो वेयर इज क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी, आपने कंप्लाई नहीं किया सो टैक्स हैज टू बी पेड, दैट्स इट। सो ऑपोजिशन बिटवीन द ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, जूरिस को लगता था ये क्रिएट हो जाएगा कि दो कोर्ट्स के बीच में झगड़े शुरू हो जाएंगे एंड दे फेल टू रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक लॉज एंड बॉडीज एज सच। मतलब डाइसी ने अपनी इस चीज के बारे में बोला, अच्छा ऐसा रूल इंडिया में कुछ है, बल है भी और नहीं भी ऐसा है। व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया? इंडिया में किस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं? वेल, विद द इवोल्यूशन ऑफ लॉ इन इंडिया, इट इज ट्रेस्ड बैक टू द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ द मॉडर्न रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमने एक अलग से रूल बनाया है, हमने एक अपना प्रिंसिपल बनाया है, हमने एक फाउंडेशन लेड डाउन किया है कि किस तरीके से लॉ प्रिवेल करेगा। एंड द रूल ऑफ लॉ इंडिया के मल्टीपल पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया। पहला ही पार्ट प्रियम्बल का पार्ट होता है जो इंडिया के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करता है, दैट इज अपहोल्ड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये बात करता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। ये इंश्योर करता है कि रूल ऑफ लॉ सारे कंट्रीज में बराबर से फॉलो किया जाए। ओके, सो दैट्स व्हाट इट टॉक्स अबाउट। जबकि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स इंडिया में ये भी एक सुप्रीमेसी रखता है। दीज आर द राइट्स जो कोर है कॉन्स्टिट्यूशन के। They imply that the duty is on the state towards ensuring the welfare of the citizen. It helps to check the action of the administrator. That is what the fundamental right is. The rights are core to the citizens. Okay? It implies the duty of the state for the welfare of the citizen and check the administrator. Directive principles करके भी states के लिए बनाए गए। Direct So directive principles for the state policy है क्या? Well, these are the basic guidelines to be followed, especially by the government of India to ensure the smooth functioning of the country. It is not enforced by court of law. Okay? Few example of directive principles are like wage law वगैरह। ये state अपने हिसाब से, अपनी requirements के हिसाब से बनाता है। ठीक है? Coming further, चलिए आगे देखते हैं। Another case law. This was Airport Authority versus Central Aviation Policy Safety and Research case 2022 का था। In this case, Supreme Court observed that the court has erred in interfering with the administration policy decision to tender, making the authority in exercise of the power of Article 226 of the Constitution, even deciding on merits. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जहां पर अथॉरिटी ने, मतलब जहां पे कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी डिसीजन के बीच में इंटरफेरेंस समझना चाहिए, तो आर्टिकल 226 जहां पे हाई कोर्ट के स्पेशल पावर्स होते हैं उसको इंटरप्रेट करते समय भी उनसे एक गलती हो गई। ओके, दे हैव अर्ड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीस काइंड ऑफ थियरीज आल्सो। ओके, so what is the outcome? मतलब ये कहना क्या चाहता है? Well, as per the settled position of law, setting terms and conditions of invitation to tender are within the ambit of administrative policy decision of the tender making authority, and as such are not open to the judicial scrutiny. तो ये क्लियरली बोला गया। देखिए, एक टेंडर का जो प्रोसेस होता है, एक टेंडर को इंप्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, एक टेंडर को एक्सेप्ट करने का जो तरीका होता है, ये वेल विद इन टेंडर अथॉरिटी के अंदर होता है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी तरह की जुडिशियल हियरिंग या जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं करता। दिस प्रोसेस इज वेरी मच आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी एंड मैलिफाइड अनलेस, जब तक वो आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी, मैलिफाइड नहीं है तब तक कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस किसी भी नेचर में, किसी भी तरीके में आना सही नहीं है। So in the matter of formulating conditions of tender document, awarding a contract, greater latitude is required to be conceded by the state authorities unless the action of tendering authority is found to be malicious and misuse of statutory powers in interference of court is not found. तो जब तक स्टेट अथॉरिटी कोई मलेशियस या मिसयूज नहीं करती तब तक टेंडरिंग अथॉरिटी अपना प्रोसेस फॉलो कर रही है, अवार्ड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को सूटेबल कैंडिडेट्स को। ओके, और स्टेट अथॉरिटी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, दे कंसीड द रिक्वेस्ट, यस इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो इस एक्सेप्टेंस के प्रोसेस के अंदर द कोर्ट और द जुडिशरी शुड नॉट बी इंटरफियरिंग। ओके, सो इस केस का आउटकम बस इतना ही था कि द कोर्ट और द जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर इन द टेंडर मेकिंग प्रोसेस।
Court or judiciary should not hear tender process. Okay. So the court or the judiciary should not interfere in the tender making process anyhow and everywhere. Okay. Okay. आगे देखते हैं आगे का केस लिमिटेशन एक्ट. यस, लिमिटेशन एक्ट से क्या केस था? वेल, SM गोगेबाई वर्सेस शेड्यूलर लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का केस 2022 का जजमेंट था. और क्या हुआ? लेट्स सी. In this case, the appeal was filed against the order dated 16th of November passed by National Committee Law Mumbai bench with the application, and it was filed by the appellant under Section 9 of IBC, was rejected as time barred. Wow. इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के साथ लिमिटेशन का इंटरप्रिटेशन है, दैट इज अपील वाज फाइल्ड के उसका आईबीसी एप्लीकेशन टाइम बार्ड कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया. लेट्स सी. वेल, आगे कहते हैं कि ट्रिब्यूनल डिसमिस द अपील स्टेटिंग दैट वी आर सैटिस्फाइड दैट फॉर द लिमिटेशन फाइलिंग सेक्शन 9 एप्लीकेशन आर्टिकल 137 which is attracted under Article 127, the time from which the period begins to run is when the right to apply accrues. And right to apply accrues when the invoices which is issued by the appellant to the corporate debtor were not paid. So invoices on the basis of which the payment is claimed is more than 3 years earlier from the date of filing of Section 9 application, which is a basis for rejection. Okay. तो क्लियरली बोल दिया गया. देखिए, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग सेक्शन 9 एप्लीकेशन बोलते हैं, और उसकी एप्लीकेशन लेने के लिए लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 137 यूज होता है, जिसमें बोला गया है कि जिस दिन आपको पेमेंट नहीं होती तो इनवॉइस की डेट से 3 साल में आपको आपका पेमेंट क्लेम करना होता है. और अगर आप अपना पेमेंट क्लेम नहीं कर रहे तो इन दैट केस आपको लिमिटेशन पीरियड किसी भी नेचर में हेल्प नहीं करेगा. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लिमिटेशन पीरियड हेल्प करे तो आपको 3 इयर्स के अंदर वो क्लेम फाइल करना चाहिए. जो भी क्लेम 3 इयर्स के बाद आएगा, वो अपने आप में टाइम बार्ड हो जाता है, वो अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं होता है. क्लियर? तो इस केस में जो आउटकम था वो ये था कि एनी क्लेम आफ्टर 3 इयर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इवन आईबीसी प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी स्टार्टेड. ओके. सो claims after 3 years are unacceptable under Limitation Act and time barred for IBC proceedings. Okay. Now the other question was Ajay Dabra versus Pyare Ram. Let's see what is the case of limitation here. In this case, the impugned order, impugned मतलब जो challenge order किया गया उसको impugned order बोलते हैं, of the High Court of Himachal Pradesh dismissed the delay of condonation application under Section 5 of the limitation, declining to condone a delay of 254 days because the reason which was assigned for the condonation was not sufficient reason for condonation of delay. Condonation का मतलब होता है to forgive the delay that has happened. That is, forgiveness of the delay is called as condonation of delay. This was not found to be a sufficient reason for condonation as the appellant was affluent businessman and a hotelier. Okay. The Supreme Court said that we do not have a case at hand where the appellant is not capable of purchasing a court fees. He did pay the court fees ultimately, though belatedly. But then, under the facts and the circumstances, the reason assigned for the delay in filing the appeal could not be a valid reason for condonation of delay, since the appellant could have filed the appeal deficient in the court fees as per the law also.
And therefore, we find that the High Court was right in dismissing a Section 5 application as insufficient funds could not be a sufficient ground for condonation of delay. It would have been entirely a different matter had the appellant filed an appeal under Section 149 of CPC and thereafter removed the defects by paying the deficit court fees. That has been evidently not done. So इस केस में बोलना क्या चाहता है? इस केस में बोलना ये चाहता है कि appellant का केस ये था कि सर एक्चुअली ये केस फाइल करने में डिले हो गया। अच्छा, क्यों डिले हो गया? क्योंकि सर मेरे पास पैसे नहीं थे कोर्ट फीस खरीदने के लिए। अरे आपके पास कोर्ट फीस खरीदने के पैसे नहीं थे तो उसमें केस क्यों डिले कर दी? इनफैक्ट कोर्ट इस बारे में हेल्पफुल है। आप अपना केस इनसफिशिएंट कोर्ट फीस के बेसिस पे भी फाइल कर सकते हो और उसके बाद आप टाइम लेके कोर्ट फीस बाद में भरने का टाइम भी ले सकते हो। So if you could have filed your case even with the insufficient fees, yet the court would have accepted it. And once the court would have accepted, they would have given you time to go out there and then pay the court fees, and then we will decide your hearings. So why did not do that? In that event, the Supreme Court said that was not a sufficient ground. Rather, आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है और आपने उसको एक ग्राउंड बना दिया कि सर पैसा नहीं था इसलिए कोर्ट फीस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई नहीं, ना बेटा ना, ऐसा नहीं हो सकता। एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्टेटेड दैट deficiency in funds to buy court fees cannot be ground to condone the delay under Limitation Act. Okay, so deficiency in funds to buy the court fees cannot be the ground to condone the delay under the Limitation Act. So that was another unique case, but yes, that was the case. Okay. Then another case, yes, civil court wala, CPC wala. What was the case about or kya tha case? Let's see. So now we are starting with CPC. Jitendra Kumar Khan versus the Peerless General Finance and Investments Company Limited. The court stated that equitable set-off is different from legal set-off. Equitable set-off is based on principle of justice, equity and good conscience. Yes. लेकिन लीगल सेट ऑफ में क्या होता है कि जहां पर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका है और ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जबकि इक्विटेबल सेटअप क्या होता है, जैसे आपने किसी को कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने को दी है और वो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसने आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझे बिना गुड्स भेजे। अब आपको वो गुड्स एक्सेप्टेबल नहीं है और कई गुड्स आपको वापस करने पड़ गए हैं। So equitable set off is not actually a kind of set off. It's मतलब ये ऐसा है कि आपने कई चीजें एक्सेप्ट ही नहीं की है, उसका आउटकम है। जबकि आप एक बात करो लीगल सेट ऑफ, तो लीगल सेट ऑफ अपने आप में ऐसा होता है कि इट्स समथिंग लाइक अ काउंटर क्लेम और अ सेट ऑफ व्हिच वी क्लेम इन सीपीसी। और यहीं पे वो कोर्ट समझा रहा है कि इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लीगल सेट ऑफ, independent of the provision of CPC, that mutual debts and credits across demands must have arisen out of the same transaction to be connected in the nature and circumstances, and such a plea is raised not as a matter of right, that is the discretion of the court to entertain and allow. So equitable set of हर केस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, it can differ from case to case also. Okay, यहाँ पे point ये है कि we are claiming such kind of set off, we are claiming such kind of मैनर ऑफ सेट ऑफ जहां पे हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें एक सूटेबल रिलीफ चाहिए। ओके, लेकिन रिलीफ भी कैसे नेचर की, ऐसे नेचर की कि सेम ट्रांजैक्शन अराइज है। तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपसे कुछ चीजें बनवा के लेने के लिए और आपने वो चीज बनाई, लेकिन आपने मेरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं बनाई, तो मेरे लिए वो किसी काम की नहीं है। तो आई एम नॉट रेडी टू पे फॉर दैट। तो आई एम सेइंग दैट दीस प्रोडक्ट्स आई एम नॉट रेडी टू पे, बाकी की चीजें मेरे हिसाब से तो आई एम रेडी टू पे। तो आई एम क्लेमिंग अ इक्विटेबल सेट ऑफ कि ये इक्विटी है जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? आपने उस चीज को उसके हिसाब से बनाया ही नहीं। और समझा? जबकि बेसिक सेट ऑफ क्या होता है कि मुझे आपसे कुछ पैसा लेना है और आपको मुझसे कुछ पैसा लेना है, तो यहां पे सेट ऑफ होता है, वो भी एक तरीका अलग होता है, बट यस इट कम्स आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन।
नाउ अनदर केस, सो ये केस बस इतना ही था, इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ। इस केस को इस बारे में ध्यान रखना। ओके, अनदर केस इज दलपत कुमार एंड अदर्स वर्सेस दिस केस। अच्छा केस है, पढ़ते हैं। अब दलपत कुमार के केस में क्या हुआ था, लेट्स सी। दलपत कुमार का केस ऐसा है कि द कोर्ट हेल्ड दैट द थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स to be satisfied while granting a temporary injunction, that there should be a prima facie case, the injunction is not granted, it would lead to an irreparable loss and the balance of convenience. So किसी भी केस में अगर इंजंक्शन चाहिए तो क्या चीजें देखनी, तीन बेसिक चीजें देखनी। एक प्राइमा फेसी केस था जिसमें इंजंक्शन की रिक्वायरमेंट थी। इस केस में अगर इंजंक्शन उसको रोका नहीं गया तो वो कुछ जाके नुकसान कर देगा, उसकी प्रॉपर्टी तोड़ देगा या कुछ बहुत बड़ा कर देगा। और ये जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, ये देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस तरह या इस तरह इंक्लाइंड है, मतलब एक पार्टी सुपीरियर है और दूसरी इंफीरियर है, तो जो इंफीरियर है वो डर के बैठा है कि सुपीरियर वाला उसके साथ कुछ गलत ना करे। So these things, these factors has to be seen while granting injunction. The court stated that the judgment that satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient to grant the injunction. The court further has to satisfy the non-interference by the court would result in irreparable injury to the party seeking the relief, and there is no other remedy available to the party except the one to the injunction, and he needs a protection from the consequences which is apprehended inquiry or disposition of irreparable injury. The third condition is balance of convenience. The court ने यही चीज बोली कि किसी भी तरीके के इंजंक्शन को पास करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है कि नहीं। नो डाउट फॉर दैट, प्राइमा फेसी केस अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। जस्ट लुकिंग एट द केस यू से ओके बेचारी को सफरिंग हुई, नहीं, इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले को कोई इरिपेरेबल लॉस तो नहीं हुआ। अगर कोर्ट एक्शन नहीं लेगा तो सामने वाले का नुकसान तो नहीं होगा। अगर अपनी जगह पे स्टेटस को वैसे ही मेंटेन रहने वाला है, चीजें वैसे ही रहने वाली, तो इंजंक्शन देने का कोई मतलब ही नहीं होता। ओके, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना पड़ेगा कि कहीं कोई दबा हुआ, कहीं कोई डरा हुआ ऐसा पर्सनालिटी तो नहीं, वो पॉइंट भी देखना पड़ता है। देन यहाँ पर इस केस में इनफैक्ट ये तीन बातें इंपॉर्टेंट थी। व्हाट आर द थ्री मेन रिक्वायरमेंट्स टू बी ग्रांटेड फॉर दिस, तो इस बात हो गया। Another case was this one, Supreme Court में B.L. Kashyap and Sons versus DM Steels and Power का केस। इस केस में क्या हुआ, Supreme Court held that the leave to defend in case of summary suit should only be granted in exceptional cases. That is, summary suit में होता ये है कि अगर आपने summary suit फाइल किया तो सामने वाले को डिफेंस करने के लिए 10 दिन का टाइम देते हैं। लेकिन ये डिफेंस का टाइम जो है ये बहुत ही स्टैट्यूटरी बाउंडेड टाइम है, आपको सूटेबल एक्शन बहुत जल्दी लेना होता है। The leave to defend shall be denied only on the grounds that there is no fair and reasonable defense. Okay, so leave to defend है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। The application seeking leave to defend would not be correct to approach and proceed as if denying the leave to defend is a rule. And leave to defend is to be granted only in exceptional cases or in the cases where defense would appear to be meritorious one. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं है कि सामने वाला डिफेंस लेके आ गया तो आपने उसको लीव टू डिफेंस दे दी। नहीं, लीव टू डिफेंस आपको तभी देनी चाहिए व्हेन यू आर सैटिस्फाइड बियॉन्ड ऑल डाउट्स, व्हेन यू आर सैटिस्फाइड बियॉन्ड ऑल डाउट्स कि लीव टू डिफेंस देना ही पड़ेगा। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लीव टू डिफेंड हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर, तो देन लीव टू डिफेंस हैज टू बी गिवन। और जहां पे भी केस ऐसा है जहां पे मेरिट रिक्वायर्स अ लीव टू डिफेंस, देन इट शुड बी। Even in the cases of raising a triable issues, the defendant indicating is having a fair and reasonable defense, he is only entitled to unconditional leave to defend unless there is a strong reason to deny. So whether there is a reason to deny or not, whether there is a leave to defend required or not, that has to be seen. So unless there is a different kind of issue, आपको ये देखना होगा कि should the court allow this leave to defend or not. So leave to defend का मतलब ये होता है permission to defend, और ये परमिशन टू डिफेंड देते हैं जब आप सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हो कि डिफेंडेंट के पास एक मेरिटोरियस केस हो, वो जीत सकता है और ये डिफेंस बनता है, तब देना चाहिए। समरी सूट्स में केस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जाती है, देयरफॉर द डिफेंडेंट पार्टी कमिंग एंड डूइंग द डिफेंस, द कोर्ट हैज टू स्टॉप देम, they have to understand whether the defense is suitably required or not.
If the defense is not suitably required, no leave to defend should be given. Okay? So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समरी सूट पे लीव टू डिफेंस के बारे में डिस्कस किया था. इस केस को इस बात से याद रखना. Okay? Clear? The next, okay, now we are on criminal procedure code. Okay, chalo good. So let's see and understand CRPC provisions. I will take this one. The Supreme Court, in the case of Arnish Kumar versus State of Bihar, the need for a caution in exercising the drastic power of arrest has been emphasized time and again by the courts, but has not yielded the desirable results. Again, the power of arrest and the bail application पे अनिश कुमार का केस इस नाम से फेमस हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने काफी बार ये डिसीजंस दिए हुए हैं कि अरेस्ट को कैसे सोच समझ के किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक भी पुलिस का अरेस्ट का प्रोविजंस इज नॉट क्लियर टू देम. इट सीम्स the power to arrest greatly contributes to the arrogance and the failure of magistracy to check it. और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैजिस्ट्रेट उसके बारे में ध्यान नहीं रख रहा. किसी को भी किसी भी टाइम पे कैसे भी नेचर में अरेस्ट कर लिया जाए, ये नहीं चलता. ओके, नॉट ओनली दिस, द पावर ऑफ अरेस्ट इज वन ऑफ द lucrative sources of police corruption also. The attitude to arrest first and then proceed with the rest is despicable. It has become a handy tool to the police officer who lack sensitivity or act with an oblique motive. Supreme Court is criticizing the police department that the arrest with the nature which has been done is non-proper. Proper corrupt, आप ये मतलब it has become a source of corruption for the police के सामने वाले को डरा धमका के तेरे खिलाफ ऐसे ऐसे सेक्शन लगा के जेल में डाल दूंगा, सारे सालों तक सड़ता रहेगा. तो that is rather becoming a source जहाँ पे पुलिस वाले डर गए हैं और जहाँ पे पब्लिक डर गई है पुलिस से. तो यही वजह से सुप्रीम कोर्ट has said that these kind of leave to defense, that is this kind of arrest powers cannot be given to police in a full-fledged manner. तो इसके ऊपर मैजिस्ट्रेट को एक्सरसाइज करनी चाहिए. जब 24 घंटों में मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने लाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट शुड बी सेटिस्फाइड कि अरेस्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट. We believe that no arrest should be made only because the offense is non-bailable and cognizable, and therefore the lawful for the police officer to do. Just because एक offense non-bailable, cognizable है उठा के जेल में डालो, नहीं. You have to be convinced beyond all doubt that there is a person who has done something wrong, and then the arrest should have been made. Not because just it is a non-bailable and cognizable. Okay. So good case. Again, ये जो केस था, this was a case about power to, that is the power of arrest by police officer should be exercised judiciously. Okay, so the power of arrest has to be exercised judiciously. Okay, coming to the next case is of special courts and tribunals and companies. ये especially old course वालों के लिए था, new course में ये chapter के लिए, पर ठीक है. So let's complete. इस केस चैप्टर में क्या है? सेक्शन 58 के अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल. ये ऑलरेडी हम लोगों ने नोट्स में कवर भी किया हुआ है. तो that in the opening portion the words not exceeding 11 is actually omitted. So ये omit हो चुका है, and the detail of changes are that the restriction on the appointment of number of judicial and technical member has been removed. Okay, so that is law ने अब वो जो restriction था कि पहले इतने ही judicial members होंगे, वो अपने आप में remove कर दिया गया है. और clause B की जहां तक बात करें 53N के हिसाब से, the words figures are very clear. अच्छा, details of changes क्या है? NCLT has constituted under section 410. It is empowered to hear appeals against any direction, decision or order which is passed under section 53A of the Act in accordance with the Act. तो ये part भी जो changes किए गए 53A के हिसाब से, that is this has been substituted. तो NCLT आ गया है. पहले competition court के अंदर एक different process चलता था और एक process अलग चलता था. तो यहाँ पे NCLT जो है, now that is empowered to hear any direction, any record, anything of section 53A of the Competition Act.
ठीक है, ये लीगल चेंजेस किए गए थे, बस इतनी बात का ध्यान रखने का है। और बेंचेस के बारे में जो चेंजेस थे वो ऐसे थे, कंपनीज अमेंडमेंट है, ये सारे चेंजेस अपने नोट्स के अंदर है। Inserted that 418A in the Companies Act. The power of NCLT may be exercised by the benches and therefore thereof to be constituted by the chairperson. It has been provided that the bench of a NCLT shall have at least one judicial member and one technical member. ओके, तो एनसीएलटी की बेंच क्या रहेगी? देयर शुड बी वन जुडिशियल एंड टेक्निकल, दो जन तो कम से कम चाहिए एक बेंच के अंदर। The benches of the NCLT shall ordinarily sit at New Delhi or such other places as the central government in consultation with the chairman notify. Provided that the central government, by notification after consultation with the chairperson, establish such number of benches of NCLT as to hear the appeals, okay, or decision referred in 53A and under section 61 of IPC. So NCLT के benches constitute की जाएगी, that is the outcome. So the benches of NCLT will sit at New Delhi और जो bench होगी उसके अंदर chairperson का होना जरूरी है। Central government will notify और कहाँ पे कैसे bench होगी और किस तरीके से पूरे cases सुने जाएंगे। यहाँ तक कि Competition Act के अब सारे cases जो है वो NCLT में जाएंगे और IBC के cases भी NCLT और NCLT की तरफ ही जाएंगे। तो the Tribunal of Company Law is given a special jurisdiction of competition as well as insolvency and bankruptcy. So the impact is that the provision related to constitutional power and sitting of the jurisdiction of NCLT has been notified. That is the amendment. तो यही amendment था इस चीज के बारे में। ये already अपने notes के अंदर भी है और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में था, अच्छा, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बात था। स्पेशल कोर्ट्स, आई थिंक ये भी आपने नोट किया होगा। ये पुराना प्रोविजन था, दिस वाज द ओल्ड प्रोविजन, बट न्यू प्रोविजन ये अपने नोट्स में पढ़ा होगा। दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452 एस्टैब्लिश एंड डेजिग्नेट स्पेशल कोर्ट्स एज नेसेसरी। तो अब स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करने के बारे में बातचीत की गई एज पर द न्यू, एंड द इम्पैक्ट इज द न्यू प्रोविजन of 452 is punishment for wrongfully withholding. Okay, so 452 यानी this was a section, ये section punishment for withholding, ये भी अब special courts को रेफर किया जाएगा। That is a provision all about. Okay. Now arbitration and conciliation amendment act में भी जो changes थे, कुछ ऐसे changes हैं। That is the Honorable President of India has promulgated Arbitration Conciliation Ordinance of 2020 with an objective of ensuring that all the stakeholders party get an opportunity to seek unconditional stay for enforcement of arbitral award, where underlying arbitration or contract of arbitral award is induced by fraud or corruption. So ये एक प्रोविजन डालने की बात की गई थी, ये नोट अगेन अपने नोट्स में भी है, जहां पे ये प्रोविजन इस तरीके से है कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड फ्रॉड या करप्शन के थ्रू लिया जाता है उस पे एक अनकंडीशनल स्टे इंपोज करने की बात की गई। वेल 43J of arbitration conciliation prescribes qualifications, experience, norms for accreditation of arbitrators is substituted with following section। तो देखिए क्या सेक्शन डाला गया। Well, the qualification, experience and norms for accreditation of arbitration shall be accordingly the qualification of arbitrators which are earlier prescribed by the Principal Act will now be through regulations. Okay. So actually ये जो starting point था ये 2021 amendment था Companies Arbitration Act और इससे हमने Indian Institute of Arbitration and Mediation की start की। इनफैक्ट आज अगर आप जाके नेट पे भी चेक करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन बन चुका है और इस एक्ट की वजह से अब आर्बिट्रेशन का अपॉइंटमेंट और तरीका रेगुलेशंस के थ्रू होगा, ना कि कोई एक्ट के थ्रू होगा। ये अमेंडमेंट डालने की बात है। तो एक्ट में अपने प्रोविजन है, सेक्शन 13, सेक्शन 11 वो सब है, लेकिन उसके सपोर्टिंग में रेगुलेशंस आ जाएंगे ताकि एक पर्टिकुलर नेचर में एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कैसे प्रैक्टिस होगा उसके बारे में यहाँ पे नोटिफाई होगा। इसलिए हमने स्टडी करते समय भी देखा था कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कैसे हो सकते हैं। ओके, फिर आते हैं आर्बिट्रेशन के अंदर दूसरे केस पे, दैट वाज ओरिएंटल इंश्योरेंस केस। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द केस, द डिटेल्स ऑफ द केस आर फॉर डिसाइडिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11(6). For deciding the application under section 11(6), the court is required
the court is required to ensure that arbitrable dispute exists and has to be a prima facie convinced about the genuineness and credibility of the plea and not to be particular about the nature of the plea which is necessary to be made established by substantive proceedings. तो यहाँ पे देखिए जज बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, कोशिश ये है इस फैक्ट ऑफ द केस में कि कोई भी केस को जब आर्बिट्रेशन में रेफर किया जाता है तो देयर शुड बी एन आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट, एक केस होना चाहिए जिसमें झगड़ा एक्सक्यूज मी सॉरी, जिसमें झगड़ा इस नेचर का हो कि दो पार्टीज के बीच में एक्चुअली डिस्प्यूट है और जेन्युइन क्रेडिबल डिस्प्यूट है. It is not particular to some nature or some kind of plea, but it is actually a dispute which is existing between the parties. अब ये केस ऐसा था, Dixitized respondent obtained a standard fire and special peril policy from the Oriental Insurance. A fire broke out which spread for the first floor of the building and completely engulfed all the appellant's free godown. The respondent informed the appellant about the fire and consequential loss also. The appellant, that is CP Mehta, as a surveyor and assessor, surveyed the loss, and the surveyor appointed by the insurer, final survey report was given, recommending that the claim be settled for 12 crores 28 lakh 60,000 be paid over the respondent. The respondent addressed various letters to the appellant chairman informing him of the financial distress that is facing and requesting for the settlement of claim. Apparently, the appellant appointed a chartered accountant, Mr. Naveen Chand, an associate, to carry out a re-survey of the claim by the respondent. Respondent received an email from the appellant stating that the discharge of the voucher for the balance amount of claim has been described as being enclosed. Respondent placed on record the total claim of approximately 15 crores and the surveyor has accessed approximately 12.93 crores. Respondent stated that the basis of arriving is 7.6 crores was not explained by the appellant. Respondent submitted along with the discharge of voucher full and final settlement of their claim due to urgent needs of the funds to meet the mounting liability. Respondent placed on the record the objection same was signed due to the pressure of the respondent and applied to Bombay High Court 11/6 of the arbitration. Bombay High Court allowed the application and the appellant filed the appeal. Okay, so इस केस में यहाँ पे अपील ओरिएंटल इंश्योरेंस ने फाइल की. केस क्या था? केस ये था कि एक जगह पे फायर लगी है और फायर इंश्योरेंस लिया गया. अब एक्चुअली वहां पे गोडाउन्स में फायर लगी और जो सर्वेयर आया उसने सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाई. रिपोर्ट देने के बाद उसने बोला कि टोटल क्लेम्स कुछ 12 करोड़ ऑड अमाउंट के आसपास देना बनता है. अब जो कंपनी वाले हैं वो बार बार एप्लीकेशन करके मांग रहे हैं. ओरिएंटल इंश्योरेंस ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाया रीसर्वे करने के लिए कितना फंड्स देना है. कंपनी वाले बोल रहे सर आपका सर्वेयर आया सब कुछ करके गया और आप अभी तक क्लेम नहीं दे रहे. कंपनी का क्लेम अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ का था. सर्वेयर ने आने के बाद वो रीसर्वे करते हुए क्लेम का फिगर 7.16 करोड़ बोल दिया. अब ये रीजन क्या था कि सडनली ये क्लेम गिर गया. एज अ रिजल्ट कंपनी वालों ने सबमिट किया कि आप हमें हमारा वाउचर के हिसाब से डिस्चार्ज कीजिए फंड्स सो दैट हमें अपनी कंपनी को शुरुआत तो कर सके. और उन्होंने दैट इज प्रेशर बनाना शुरू किया. अब इन दैट केस ये जो रीसर्वे की वजह से क्लेम कम हुआ था तो आर्बिट्रेशन क्लॉज की वजह से उन्होंने दैट इज कंपनी वालों ने आर्बिट्रेशन एंगल शुरू किया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके आर्बिट्रेशन शुरू कर सकते हो. अब ओरिएंटल इंश्योरेंस का कहना है कि जब तक ये क्लेम का डिस्प्यूट नहीं सेटल हो सकता और अगर क्लेम डिटरमाइन करने के लिए आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता. आर्बिट्रेशन अगर डिस्प्यूटेड एंगल होगा तो होता है. तो ओरिएंटल का कहना है कि हाउ कैन वी गो इनटू एन आर्बिट्रेशन टू डिटरमाइन द क्लेम ऑफ द पार्टीज. क्लेम तो सर्वेयर या सर्वे पॉलिसी से डिटरमाइन होगा. ओके और इसी चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑनरेबल दैट ओवरऑल रीडिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट एप्लीकेशन 11/6 clearly shows that the grievance in respect to the involuntary nature of the discharge of the vouchers are articulated. कि सर वाउचर्स ये वाला डिस्चार्ज नहीं किया गया है वो नहीं किया गया है. So in that event the court is conscious of the fact that the application of 11/6 is to form a pleading which merely seeks an order for the court for appointment of arbitrator. High Court is required to ensure that arbitrable dispute exists. So ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि
सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 में आप सिर्फ एक प्लीडिंग लेते हो कि जहां पे आर्बिट्रेशन दे रहे हो और हाई कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट भी है. सो in that case the prima facie convinced that the genuinity and credibility of the plea of coercion should be there. It is not that particular about the nature of the plea which is necessarily has to be made in a substantive proceeding. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ब्लाइंडली किसी भी प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. ये प्ली ऑफ कोर्जन के ओरिएंटल इंश्योरेंस हमारे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ दबाव एक्सरसाइज कर रही है, हमें बराबर से क्लेम नहीं दे रही. दैट कैन नॉट बी द ग्राउंड of allowing a claim or allowing an arbitration. Supreme Court has given that reasoning in the impugned judgment cannot be faulted. The appeal was held to be dismissed without order of cause. तो यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट ने रीजनिंग दी है, there is no particular nature to call for a arbitration. No doubt रीजनिंग अपने आप में justifiable भी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि there is no requirement to call an appeal at such a nature. So in that case ओरिएंटल इंश्योरेंस का जो केस था दैट इज डिसमिस किया गया. इट वाज हेल्ड टू बी डिसमिस विदाउट कॉज. एंड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो सुटेबली शुरू कर सकते हैं वो करने के बारे में आपको हेल्प किया. ठीक है. सिमिलरली एक और केस दिया गया दैट इज ब्रह्मानी रिवर पेलेट्स वर्सेस दिस एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड. यानी ऊपर वाले केस का डिसीजन तो यही था भाई. हाँ जो आप पूछ रहे हो ऊपर वाले केस का डिसीजन यही था कि एक आर्बिट्रल डिस्प्यूट एग्जिस्ट होना चाहिए, प्राइमा फेसी कन्विंस होना चाहिए और जेन्युइननेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ प्ली होनी चाहिए दैट द नेचर ऑफ द प्ली हैज टू बी मेड एस्टैब्लिश इन सबसे. तो अगर एक आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट्स है और ये प्ली दी गई है कि आर्बिट्रेशन है, जेन्युइन नीड है, तो आर्बिट्रेशन करना सेंसिबल होता है. ओके. उसी तरह इस केस में द पार्टीज आर फ्री. सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस केस that the parties are free to agree the place of arbitration. Party autonomy has to be construed in the context of the parties choosing a court which has jurisdiction, two out of more competent courts having jurisdiction. So, कौन से कोर्ट को jurisdiction है, तो parties are free to decide कि ये कोर्ट या ये प्लेस में jurisdiction होना चाहिए कि नहीं होना. We cannot decide autonomy based on some strictures and conjectures and surmises. इसका मतलब देखो पार्टीज को अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कहां पे उनको केस करना है, कहां नहीं करना है. अगर उनके पास दो या दो से ज्यादा कॉम्पिटेंट कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है तो फिर सुटेबली पार्टीज डिसाइड करेगी कि कौन से कोर्ट को देने का है. मतलब अगर मेरा जुरिस्डिक्शन दो स्टेट्स के बीच में आता है तो मैं किसी भी एक कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे सकता हूं. तो ये केस इसी के ऊपर था कि दो कोर्ट से ज्यादा के जुरिस्डिक्शन को कोर्ट a decision भी पार्टी लेगी. ओके. सो द appellant केस क्या था? Appellant entered into an agreement with the respondent for the sale of 40,000 wet metric ton of iron ore pellets. Dispute arose between the parties regarding the price and the payment of terms of the appellant did not deliver the goods to the respondent. The respondent claimed the damages and appellant denied the payment. Okay. So Brahmani River has denied the payment and Kamachi Industries has claimed the refund. Now clause 8, that agreement between the parties contain an arbitrable clause. The respondent Kamachi Industries, they invoke the arbitrable clause and the appellant Brahmani Rivers did not agree for the appointment of the arbitrator. तो उन्होंने आर्बिट्रेशन का स्टार्ट किया और ये एग्री नहीं कर रही. Hence the respondent filed a petition under 11(6) of the arbitration before the Madras High Court. Okay. So Kamachi ने Madras High Court में डाला. Appellant Brahmani, they contested the petition challenging that the jurisdiction of the Madras High Court is not there because the seat of the arbitration is Bhubaneswar. So Madras High Court, okay, has no power. लेकिन Madras High Court by order appointed a former judge of Madras High Court as a sole arbitrator, and the appeal was preferred to Supreme Court. What did Honorable Supreme Court say? Honorable Supreme Court said that Section 2, subsection 1, clause E of the arbitration, the court means that is where the subject matter of suit is referred. So what is a court? A court means a court where the subject matter of suit can be referred. Now, if the subject matter of the suit is arbitration jurisdiction, two or more courts, the parties can agree to confine the jurisdiction of one competent court also. So you can make it to one court. Yes, you can make it to one court.
Para 96 of the Balco judgment, Supreme Court held that the subject matter under Section 21 is to identify the court having a supervisory control over the arbitral proceedings. तो ऐसा कौन सा कोर्ट है जो उसके आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे कंट्रोल कर सकता है, वो पता करो। एंड सेक्शन 20 के हिसाब से पार्टीज आर फ्री टू एग्री द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कि वो कहां करना चाहे। Party autonomy has to be construed in the context of the party choosing a court which has jurisdiction out of two or more competent courts having jurisdiction। यही तो पॉइंट कि दो और दो से ज्यादा कोर्ट को अगर jurisdiction है तो पार्टी की ऑटोनॉमी है, पार्टी की ऑप्शन है कि वो कौन से कोर्ट में जाना चाहे और कौन से कोर्ट में नहीं जाना चाहे। The Supreme Court observed that when the parties agree to have the venue of arbitration at Bhubaneswar, that is the Madras High Court, heard in assuming that the jurisdiction of 11-6 and thus only Orissa High Court have the jurisdiction to entertain the appeal। तो जब पार्टीज ने क्लियरली एग्री कर लिया कि द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन शुड बी भुवनेश्वर, तो मद्रास हाई कोर्ट ने सोल आर्बिट्रेटर क्यों अपॉइंट किया? ये उनसे गलती हुई और इस गलती की वजह से ओडिशा हाई कोर्ट वाज अ प्रॉपर एंड देयरफॉर दिस जजमेंट इज लायबल टू बी सेट असाइड। सो जब पार्टी ने सीट आर्बिट्रेशन, पार्टी ने अपना नेचर एग्री कर लिया, तो दैट हैज टू बी दैट रेलेवेंट कोर्ट जहां पर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्री की है, नॉट एवरी प्लेस। ओके, उसी तरह ऑयल एंड नेचुरल गैस का केस था, तो आई थिंक दिस जजमेंट इज क्लियर। दिस जजमेंट का कंटेक्स्ट वही था कि पार्टीज की ऑटोनॉमी होती है टू बी कंस्ट्रूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ चूजिंग द कोर्ट। Parties can decide which court has to be there as per the basis of seat. Another case, Oil and Natural Gas Corporation versus Saw Pipe का केस था। यहाँ पे how is public policy should be interpreted under section 34 of the act which deals with the application of arbitral award. It was decided that public policy should not be interpreted in a narrow terms with respect to the just Indian laws। तो देखो public policy होती क्या है। सेक्शन 34 में पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे आप अपील फाइल कर सकते हो, ऐसे आता है, लेकिन एग्जैक्टली ये पब्लिक पॉलिसी होती क्या है, पब्लिक पॉलिसी के टर्म्स क्या होते हैं। चलिए पब्लिक पॉलिसी के टर्म्स देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक पॉलिसी हाउएवर इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट, इट कॉनोट सम मैटर व्हिच कंसर्न्स द पब्लिक गुड एंड पब्लिक इंटरेस्ट। सो ये किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की बात नहीं है, ये बात हो रही है जो चीज पब्लिकली गुड है, पब्लिकली एक्सेप्टेड है। ये जो कंसेप्ट है पब्लिक गुड, पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक इंटरेस्ट का, इसका मतलब ये होता है कि ये इंटरेस्ट पूरी तरह पब्लिक के फेवर में तो है, ये इंटरेस्ट पब्लिक के वेलबींग के लिए है, इसके अंदर अगर किसी चीज को रिफ्यूज किया तो पब्लिक को अफेक्ट होगा, ये पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये इंडिया की मोरालिटी एंड जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। अगर हाँ तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है। ओके, जिसको बेस्ट एग्जांपल समझिए, जिस ग्राउंड पे आप एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ले लेते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट है, वही पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है। सो यहाँ पे द कंसेप्ट व्हाट इज गुड फॉर पब्लिक और इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड और व्हाट इज इंजूरियस और हार्मफुल टू द पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम। It is held that the enforcement of a foreign award would be refused on the ground that it is contrary to public policy and would be contrary to the fundamental policy of India or interest of India or justice and morality. If the arbitral award does not dispense with justice, the court would well within its right upholding to challenge the award that it is in conflict. So अगर कोई पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी की जैसे नहीं है या पब्लिक को सपोर्ट नहीं करती तो हम उसे पब्लिक पॉलिसी का नेचर नहीं दे सकते। ओके, अनदर केस यूनियन ऑफ इंडिया, तो याद रखना इसमें से पब्लिक पॉलिसी के ऊपर जजमेंट था और नथिंग एल्स, कि पब्लिक पॉलिसी आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होती है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओम वज्रा कंस्ट्रक्शन, इस केस में क्या हुआ? well, इस केस में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हेल्ड दैट अनलाइक द ट्रिब्यूनल्स एबिलिटी टू अवॉर्ड इंटरेस्ट, द कोर्ट एबिलिटी टू अवॉर्ड कॉस्ट विद इन 31A is unrestricted and any agreement between the parties that forbids the awarding of cost would be irrelevant unless they do after the dispute। So देखिए आर्बिट्रेशन में क्या रहता है, कॉस्ट अवॉर्डिंग का केसेस होता है जहां पे कॉस्ट अवॉर्डिंग दी जाती है, दैट इज अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं कर रही, फ्रिवोलस एप्लीकेशन दे रही है, डिले कर रही है, तो सुटेबल कॉस्ट कैन बी अवॉर्डेड, या फिर आज के नेचर में एडजर्नमेंट्स लेने पे कॉस्ट होती है। सो
अगर पार्टीज कॉस्ट अवॉइड करने के लिए एग्रीमेंट में लिखती है कि हमारे केसेस में कॉस्ट अवॉर्ड नहीं दिए करे जाएंगे, सो सेक्शन 31A अपने आप में ओवरराइट हो जाता है। ओके, तो इस केस में दिस केस में बस इतना ही था कि दिल्ली हाई कोर्ट अनलाइकली, दैट इज आपको जो कॉस्ट होता है, मैं आपको वही समझा रहा हूं, जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट आप ओवरराइट नहीं कर सकते। आप एग्रीमेंट में लिख के ये नहीं बोल सकते कॉस्ट कभी इंपोज ही नहीं होगा। सो नो क्लॉज ऑफ आर्बिट्रेशन कैन बी पास्ड। यही पॉइंट था कि पार्टीज forbid the awarding cost would be irrelevant unless they have to do so after dispute has arisen. Okay. Then another case, arbitration का एक case था, that is in this case it was observed that just because the appointed arbitrator happens to be an ex-employee of one of the party, it shall not make it ineligible for the appointment. So देखो, एक सेक्शन 12 का एक पार्ट आता है जहां पे आर्बिट्रेटर इनएलिजिबल कब होता है। तो अगर एक आर्बिट्रेटर कोई पास्ट एम्प्लॉय था, ओके, सो दैट डज नॉट मीन दे इज वो इंटरेस्टेड कैसे है पार्टीज के साथ, वो पास्ट एम्प्लॉय था बात अलग है, आज वो इंटरेस्टेड कैसे वो देखना होता है। सो द प्ली urged by the petitioner seeking the appointment of a sole arbitrator and disqualified by the panel being proposed or nominated by the arbitrator by the respondent being hit by the provision of section 12 is not maintainable. So clearly बोल दिया गया, just because यही था उसका, it has to be a past employee, it cannot be ineligible for the appointment. And Cholera controls केस में इसमें क्या हुआ क्या? Well, ये केस ये था कि the court held that challenge the existence of validity of arbitration agreement will not prevent arbitral tribunal from proceeding with hearing and ruling upon its jurisdiction. The negative impact of the principle is that the arbitrators are entitled to be filed first to determine the jurisdiction, which is later reviewable by the court when there is an action to enforce and set aside the arbitral award. So यहाँ पे कोर्ट बोलने की कोशिश क्या कर रही है? कोर्ट बोलने की कोशिश ये कर रही है कि if you are challenging the validity of the arbitration agreement, so validity of an arbitration agreement that will not prevent tribunal on hearing the matter of jurisdiction, कि ट्रिब्यूनल तुम अपने केस को सुन ही नहीं सकते क्योंकि हम jurisdiction challenge कर रहे हैं। See, first case ऐसा होता है, the jurisdiction has to be heard by the tribunal. If the tribunal is convinced beyond all doubts that there is no jurisdiction, so they will not hear the matter. But if they are convinced that there is a jurisdiction, then you should be proceeding to the court. फिर जाके कोर्ट में इसको चैलेंज करना है तो पहले ट्रिब्यूनल को चैलेंज करो, फिर कोर्ट में चैलेंज करो। Okay, and where the dispute is not before the arbitral tribunal, the court must decline the jurisdiction until and unless arbitration agreement is patently void, inoperative, capable and unfair. तो जब तक कोर्ट ये इस बात से कन्विंस्ड नहीं है कि एग्रीमेंट इज पेटेंटली वॉइड, इनऑपरेटिव, द कोर्ट मस्ट नॉट इंटरफेयर इनटू द मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, ये भी एक अच्छा केस था। सो दैट इज द कोर्ट हैज टू डिसाइड द मैटर ऑफ दिस। एंड देन चोलामंडलम केस, इस केस में ये था, द केस हैज गिवन a clarification of unilateral appointment of arbitrator. मतलब Calcutta High Court has decided that in the light of aforementioned judicial precedent, it is said that the unambiguous uncertainty that unilateral appointment of arbitrator by award holder is illegal and void. However, what still remains to be determined is the impact of aforesaid illegality on arbitral award and the present execution petition. So, Calcutta High Court ने क्या बोला कि based on all the judgments, एक unilateral appointment of the arbitrator by the award holder, that is जिसने ये केस जीता है उसी ने ये arbitrator appoint किया था, that cannot be allowed, क्योंकि आपने दूसरे पार्टी को सुना ही नहीं, बोलने का हक नहीं दिया या उनसे परमिशन नहीं दी। तो अगर जिसने ये केस जीता है उसी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया था और वही केस जीत गया, तो दैट इज नॉट अ वैलिड अपॉइंटमेंट। सेक्शन 12 में आप चैलेंज कर सकते हो। ओके, द कोर्ट हेल्ड दैट द सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द कंप्लायंस विद सेक्शन 12(5) एंड शेड्यूल 7 इज साइन qua non फॉर आर्बिट्रल रेफरेंस। यस, दैट इज हाउ इट इज कि आर्बिट्रेशन में सेक्शन 12 हैज टू बी कंप्लाइड and it is a mandatory requirement that has to be recognized for the validity of the proceeding. In the present case, arbitral reference with itself began with an illegal act that vitiated the entire arbitral proceedings from the inception, and the same cannot be validated later also.
तो अगर स्टार्टिंग से ही इलीगैलिटी परसिस्ट कर रही है, स्टार्टिंग से ही चीजें सही नहीं हो रही, हाउ कैन इट बी लेटर बी वैलिडेटेड एज अ नॉर्मल केस? एंड इट वुड बी लॉजिकल इंटरफेरेंस टू कंसिडर द अफॉर्मेशन्ड थिंग एज वॉइड एब इनिशियल। तो जहां पर आर्बिट्रल पर्सन खुद अपने आर्बिट्रेटर का अपॉइंट करके जीत जाता है, दैट इज नॉट द केस ऑफ आर्बिट्रेशन। द कोर्ट another case, okay, तो ये याद रखना, ये केस ऐसे ही था कि you cannot appoint your own arbitrators and win the case. You should appoint arbitrator with the consent of the parties. Okay? The court exercising the power in 37 modify the orders of the arbitral tribunal to protect the subject matter? The answer is yes. See, the High Court of Delhi has said that this court is aware of the limited scope and interference and appeal against the order of arbitrators. However, in appropriate case, the court can exercise the jurisdiction of Section 37 to protect the legitimate interest of the appellants. It is noted that the jurisdiction of this court is substantially different from the jurisdiction of Section 34, but does not include authority to modify the award. तो कोर्ट कहना क्या चाह रहा है? कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि कैन अ कोर्ट एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ सेक्शन 37 की पावर होती है, दैट इज वहां पे इंटरिम अवार्ड्स के बारे में बात है। कैन दे मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन? वेल, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नो डाउट द स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस जनरली अपील में कम ही रहता है इस तरह के सेक्शन 37, लेकिन केस की अप्रोप्रिएटनेस को देखते हुए, उसकी लेजिटिमेसी रिक्वायरमेंट को देखते समय ये डिसीजन देना चाहिए कि वेदर द कोर्ट शुड मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड और नॉट। एंड द जुरिसडिक्शन ऑफ सेक्शन 37 इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम 34। 34 में आप अवार्ड पास होने के बाद चैलेंज कर रहे हो, 37 में अभी भी अवार्ड नहीं हुआ है, इंटरिम अवार्ड हुआ है जिसको चैलेंज कर रहे हो। तो एज अ रिजल्ट 37 में you don't get the power to modify the entire award itself unless that award is affecting the legality. तो सेक्शन 37 जो है उसमें लिमिटेड jurisdiction है vis-a-vis compared to section 34. Okay. And what about application of fundamental rights while passing arbitral award? In this case, Calcutta High Court has said, in my understanding, the respondent seems to have found a favor in arbitrator's sympathies. But unfortunately, they did not find favor in my sympathies, and most unfortunately, they did not find favor in law also. It is evident that the consideration of discrimination and want of state functionaries to act in due conformance to Article 14 of the Constitution swayed the arbitrational's contractual interpretation. Thus, the interference can be gauged from paragraph 5 clause E of this judgment. Firstly, the arbitrator cannot have right envisaged in the fundamental rights of the Constitution or even in the equity while granting an arbitral award. वाह, क्या जजमेंट है! यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि arbitrators cannot be sitting and deciding on the fundamental right questions or the constitutional validity question in the arbitral proceedings. वहां पे हो सकता है कि आर्बिट्रेटर के को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाया वो जो पर्सन केस प्रेजेंट कर रहा था, दैट इज द पर्सन हु वाज प्रेजेंटिंग द पार्टीज केस, एंड देयरफॉर ही मस्ट हैव गॉट द सिंपैथी ऑफ द आर्बिट्रेटर कि उस बेचारे का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया। लेकिन लीगैलिटीज में आर्बिट्रेशन जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी एक्सटेंडिंग टू दैट, एंड इफ दे डू, द अवार्ड मस्ट बी सेट असाइड. इट इज पेटेंटली इलीगल. How can a constitutional question be decided by the arbitrations? They have their limitations. You cannot decide on such kind of questions. So, therefore, arbitration is a creature of the contract, and its powers must be limited with the contract and not outside thereof. Okay? And what are the various types of arbitration? ये हमने notes में भी देखा था. Ad hoc arbitration होता है. This type is not handled by a formal organization, rather number of arbitrators by mode of selection and how arbitration will be concluded by the decided. So parties has to decide कि कौन से arbitrator को appoint करेंगे और कैसे appoint करेंगे. That is called ad hoc. Domestic arbitration क्या होता है? जहां पर it is subject to Indian laws and the cause of action is based in India are called domestic arbitration. जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट an individual who is appointed as a nationality or habitual resident of that other country, या फिर he is a body corporate which is incorporated in the other country, or an association whose central management is exercised in the other country, या फिर the government of the foreign country, उसके basis पे appoint होता है.
जब हम लोग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में द मैटर इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय एंड एस्टैब्लिश्ड बाय आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, कि आर्बिट्रेशन कहां होगा, द वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज आर्बिट्रेशन डिसाइड करने के लिए कि पार्टीज कहां ये आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, एंड द पार्टीज में सिलेक्ट द आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एंड द रूल्स विल अप्लाई। एंड जहां तक लॉ की बात करें तो पार्टीज बाय एग्रीमेंट कैन चूज द लॉ व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर दैट। क्लियर? यहां तक लैंग्वेज की बात करें तो पार्टीज में एग्री टू द लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आल्सो, कि ये इंग्लिश फॉलो करेंगे या दूसरा। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की बात करें तो पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। रिमेंबर, ऑड नंबर होने चाहिए, नॉट एन इवन नंबर, बट दे आर फ्री टू डू। एंड कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करो, द कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल हैव द डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन द कॉस्ट, whether the cost is payable by one party or the amount of such cost and which costs are to be paid। तो ये पार्ट आर्बिट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट होते हैं जो अपने को पता होने चाहिए व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट द आर्बिट्रेशन।